Hello everyone, welcome back to my channel Art Cocktail. मैं हूँ निशा, आपकी host. Today I'm here with a very exciting art project, sculpture painting with homemade sculpture paste. In this video, I'm going to teach you how to make sculpture paste at home and do painting with it. It's a beginner-friendly tutorial. So I'm going to teach you everything step by step. So without wasting our time, we'll popping into our studio and let's get started. For sculpture paste, we need acrylic wall putty, Fevicol SH, talcum powder, baby diaper cellulose, marble powder, and acrylic colors. First, we are going to mix 1 tablespoon of plaster of Paris paste, 1 tablespoon Fevicol, 1 tablespoon of talcum powder, 1 tablespoon acrylic color and 1 tablespoon marble powder. Now I am mixing all the ingredients very nicely. Now we are going to tear some cellulose from baby diaper. We are using cellulose because they are very fine. We can use tissue paper fibers or any cotton fibers, but cellulose fibers are very fine, so it's best. Now we are going to mix all of them and make a fine paste. Now I have taken a wooden board and covered it with wood primer. Now I am painting it with acrylic colors. I have taken teal color. I painted the board nicely and covered all parts of a board. Now I have taken the palette knife and I am blending it on a sheet and mixing some colors in it. I am using acrylic colors. After making a fine paste, we'll blend the colors and start making the painting. I'm making the petals using the knife. ये बर्ड मैंने स्टैम्पिंग के साथ में बनाई है। सॉरी मैं इसकी वीडियो नहीं ले पाई। सेम टेक्निक के साथ में मैंने पिंक कलर फ्लावर भी बनाई है। अभी मैं ग्रीन कलर के साथ में लीव्स बनाती जाऊंगी।
अभी मैं ब्रश की हेल्प से थोड़े से स्टोन्स इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी ताकि थोड़ी सी शाइनिंग हो जाए। Now I'm going to use white color cone. Cone recipe you can get in my last video. After cone work, we are done with our painting. This is the final look of my painting. हमारी पेंटिंग बन चुकी है एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कैसी लगी है। मेरी और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। कभी कभी यूट्यूब हमें नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि और भी ज्यादा एक्साइटिंग आर्ट वर्क्स बनाऊं और आपके साथ में शेयर करूं। सो प्लीज मेरे चैनल के साथ में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।